हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेरी वार्म वेलकम टू निफ्टी 500 मार्केट रिस्क डिस्कशन विद एसडी। मैं हूं एसडी शानंदो दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। बिफोर यू स्टार्ट वाचिंग दिस वीडियो, याद रखिएगा रूल नंबर वन, रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर वन, हम लोग किसी का सुन के ट्रेड नहीं करते हैं, खुद समझते हैं और ट्रेड करते हैं। याद रखिएगा रिस्क मैनेजमेंट रूल नंबर वन। सो एनीथिंग आई एम डिस्कसिंग हियर, ये है बेसिकली मेरा वीडियो लॉग। और जो लोग मेरा ये ब्यूटीफुल फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, ये मैं बिलीव करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लुकिंग एट निफ्टी। सिंस निफ्टी का हालत ओवरऑल खराब है और मैं ये काफी टाइम से हाईलाइट कर रहा था, तो वीडियो मैं इनिशियल से ही पब्लिक के लिए छोड़ रहा हूं, नॉट स्किपिंग इट फॉर मेंबर्स टिल 3 PM। होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ओवरऑल मार्केट रिस्क को समझते हैं। सो वी विल यूज द रिस्क मास्टर। दीज आर माय स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर जिसका आप एक्सेस ले सकते हैं और मेरे बारे में आप और जान सकते हैं मेरे वेबसाइट में जाके। दिस इज माय वेबसाइट इज AANANDODAS shanundodas.com, जहां पे लाइव इनसाइट ऑन द राइट कॉर्नर क्लिक करते ये आपको लेके जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल पर। एंड यू दिस इज माय यूट्यूब चैनल, जहां पे इन जैसे कई सारे वीडियोस पब्लिश होता है, डिफरेंट प्लेलिस्ट है, आप जाके ब्राउज करके मेरा वीडियोस देख सकते हैं। And this is my X channel। आप मुझे X पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे कभी कभी मैं पोस्ट करता हूं रहता हूं। इसके अलावा मेरा फ्री व्हाट्सएप चैनल भी है। सो दीज आर द ओनली माय सोशल मीडिया जिसके जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। So let's now start, go back to our discussion. Overall situation इंडिया का वीकली चार्ट में सिचुएशन लास्ट टाइम था रिस्क एलिवेटेड और भी खराब हो चुका है। अब वीकली चार्ट में भी रिस्क बहुत इंडिया स्पेसिफिक रिस्क हाई हो चुका है, वेरी बैड न्यूज। एंड रिस्क इज राइजिंग रिस्क एक्सिलरेट हो रहा है थोड़ा ओवरऑल मार्केट बेसिस पे। ये थोड़ा निफ्टी के चार्ट पे मैं स्मॉल कैप चार्ट बढ़ाई तो ओवरऑल कोई इंपैक्ट होगा, या वीकली चार्ट पे इट इज राइजिंग ऑन द निफ्टी चार्ट। दैट्स द फर्स्ट मेजर वार्निंग। डेली चार्ट का सिग्नल, डेली चार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेली चार्ट में हम लोग चलिए देखते हैं। डेली चार्ट का रीडिंग में ओवरऑल मार्केट तो सेफ दिखा रहा है, दैट इज एक्चुअली वन क्वाइट पॉजिटिव, दैट ये एक पॉजिटिव न्यूज है। बट वोलेटिलिटी रिस्क जो है दैट इज ऑन द राइज फॉर इंडिया, मतलब इंडिया स्पेसिफिक रिस्क क्वाइट हाई है, वेरी हाई है। एंड दिस इज अ वार्निंग मैं दे रहा था कि हमारा मार्केट नीचे जा सकता है। बट जिस तरह इंडिया, मतलब हमारे मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है, अगर ये ओवरऑल मार्केट रिस्क बढ़ा, देन हम लोग के यहाँ पे सेल ऑफ बहुत ही खराब होगा और भी बदतर होगा। एंड आई होप जो लोग एग्जिट कर चुके हैं द राइट टाइम, जो लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, आई होप यू हैव एग्जिटेड एट द राइट टाइम बिफोर दिस क्रैश इज कमिंग डाउन। नाउ लेट्स लुक एट द 125 मिनट्स चार्ट। मैं तो बहुत पहले से ही वार्न कर रहा था, एंड दिस रिसेशन रिस्क के पास है हम लोग। ओवरऑल इंडिया रिस्क की ज्यादा हाई है, ओवरऑल इक्विटी मार्केट का रिस्क स्लाइटली बढ़ चुका है। सो आज जो इंटरनेशनल मार्केट से सेल ऑफ से स्टार्ट हुआ है, वो अभी भी रिस्क को उतना हाई नहीं बनाया। बट इफ द ओवरऑल मार्केट रिस्क इज गोइंग अप, देन इट इज going to be even worse news for Indian stock markets। मतलब अभी भी कुछ भी फॉल नहीं हुआ है, as I highlighted from the probabilities previous chart में जो मैं हाईलाइट किया था, और भी गिर सकता है। ना गिर ना भी सकता है, बिकॉज दैट्स व्हाई इट्स प्रोबेबिलिटी कि हो भी सकता है। इसीलिए हम लोग वो प्रोबेबिलिटी को समझ के फिर गेम बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ हम लोग रिस्क को देख लिए, ओवरऑल मार्केट रिस्क को। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज विल गो टू एसेट मास्टर, एंड नीचे हम लोग लाएंगे SDRSI-X। एंड एसेट मास्टर में अभी हम लोग इस्तेमाल करेंगे फाउंटेन ऑफ गोल्ड, यानी मदर सेटअप।
या और वी आर कैन यूज द इंडेक्स सेटअप. सो इंडेक्स सेटअप सबसे पहले हम लोग चले जाएंगे वीकली चार्ट पर. एंड निफ्टी 500 आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इट इज आफ्टर एन इनिशियल स्टॉप ओवर एट द एम्प्टी लाइन में स्टॉप ओवर के बाद if I bring on the line chart, it's clearly falling lower. नीचे का बेस पे ये पहुंच जा रहा है. Quite a very sharp sell off चल रहा है निफ्टी में. ये देखिए ये बेस को तोड़ के एम्प्टी लाइन तोड़ के नाउ इट इज रीचिंग आउट टुवर्ड्स दिस बॉटम दैट इज 22,600 एरिया. तो 500-600 एरिया से सपोर्ट चालू हो रहा है. मतलब अभी भी और 200-300 पॉइंट आराम से ओपन एंडेड इट कैन ड्रॉप. नाउ प्रॉब्लम ये नहीं है कि इट इज जस्ट कैन ड्रॉप. व्हाट नाउ ऑल द इट्स अ गेम ऑफ एक प्रोबेबिलिटी. तो बेसिकली अब प्रोबेबिलिटी जो हो गया, जो ओपन हो गया प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी आई एम कंसर्न्ड अबाउट करंटली. लेट मी रिमूव ऑल द लाइंस. फर्स्ट लेट मी ड्रॉ एक अपर लाइन नाउ फ्रॉम दिस फ्लैट. ये अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया. नाउ यू ड्रॉ अनदर लाइन विच इज लोअर लेवल पे लाइन एंड यू ड्रॉ दिस फ्लैट लाइन. Now the probabilities that has opened up. Now let me draw the probabilities with the black line. The probability it has come, it can drop like this, go up, range bound, and finally escape from here. That is one bearish probability. Even some of the more watts is present that it can drop up to this base, then go and then escape from here. These are very, मतलब मैं पहले what's probabilities highlight कर रहा हूं, then I'll highlight the good probabilities if there are any. So it can definitely say come down, go up here, it can drop from this. These are one of the worst escape, because if this escape happens, maybe another bounce back, but ultimately Nifty will now be open towards up to a drop up to this level. मतलब another 20% odd can fall. I'm not saying it will fall, but the probabilities are opening up. Whereas of course on the buy side we have this key, it dropped, then it followed this path and broke higher. Maybe Donald Trump will decide India is their preferred nation, who knows. But time is running out because Nifty is coming in challenge with this long-term line. So looking at the current chart structure, it looks like the bearish probabilities are more realistic. So I will be very cautious heading ahead. We can project the time also with this. Kitna dinon tak ye bad phase or it is turning good phase, kab tak? So it is around till June, these risks are growing. If for June, Nifty needs to go above 23,600 by June. Otherwise, downside probabilities are becoming very, very big. So, and all the sectors are suffering. And ये आज पीछे देख के लग रहा है, but I've been warning this for so long. I've been warning this for so long. सिर्फ आज आई थिंक वो लोग स्माइल कर रहे हैं, कुछ लोग जो ये सेटअप along with क्लास ज्वाइन किए हैं. We have done extraordinarily well in the right timely exit, and I don't think it is completely over even. So let's see how bad can it go, because good probabilities are still there right now. I hope the good probabilities they come back more and increase in strength, but अभी तक देख के वैसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा है. Now I'll choose the fountain of gold setup, यानी mother setup within this. ये नीचे का टेबल I don't need to know. Now I need to look at the daily chart of Nifty. It is another breakdown lower. Its level, जो level ये clear now हो चुका है, ये support level is gone. Nifty has now opened itself up towards this zone.
ये जोन तक खुद को ओपन कर चुका है. सो अपर जोन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 533 एज पर द डेली चार्ट, and lower zone is extending till almost 22,260, and there are other levels. So there are certain group of levels coming up, but it has now relatively, before the key levels set in, Nifty has quite some opening. There are certain levels which can be drawn, but none looks as strong as these ones. So ye zone tak definitely Nifty can come, and in the what sell off, it can reach up to 21,800 and then finally make a significant reversal. So as per the daily chart 12 में से 12 factor bearish red. I don't think it's time for a good bullish trade. There's more bearish trades are likely at this point. And it was a bearish signal just before the ending, and now further follow up. So Nifty is falling. Nifty remains very, very bearish right now. And there is a less looking chance of a recovery right now, rather than bigger decline seems more likely. Consolidation होने का chance is high, 43%. वो रहता ही है chance कि consolidate रहेगा कि overall, but 11 factor is bearish. तो ये even अगर consolidate लगे तो ये bearish consolidation होगा, which is can means gradually नीचे जाना. ये सेल ऑफ इंट्राडे चार्ट देख लो हम लोग. स्टार्ट हुआ है फ्राइडे 1 बजने के आसपास. ये सेल सिग्नल के साथ टफ सेल ऑफ हुआ है. Now we want to take a look at the Nifty 500 chart. एंड इसको हम लोग देखेंगे डेली और वीकली चार्ट के हिसाब से. Just give me a moment. My charge is right now slightly low, so let me allow this. Sorry friends, थोड़ा चार्जिंग में डालना भूल गया था. So it is going overall quite good. And जो लोग bearish trades and मेरे बात सुन के आउट हो चुके हैं, तो किसी का सुन के ट्रेड करना is बिल्कुल not a good thing to do. But overall we have our understanding of the market has turned well, and we are so far in terms of positioning, we are doing very well. Now looking at the Nifty, now we'll take a look at the 125 minutes chart. Minutes chart, it's breaking lower. It is quite clear that it is breaking lower in Nifty 500. And let's look at the weekly chart. It has broken the empty line support, that is the red line or medium term trend line support. Now the support is coming around 20,500. So further drop in Nifty 500 seems very, very likely. And much bigger correction is very, very much possible. And if it can break this long-term trend line, that is one of the bigger worries, then of course 16,000 to 14,500 area will open up for Nifty, which will be quite big, of 30% drop. But I'm not saying it will drop, because no one can predict the future. But from my chart structure, this is a probability. And कोई ये नहीं कह सकता it is not a probability. It is also possible कि Nifty falls, break down and goes up. But the time is running short.
Time is running short unless Nifty can start floating above now 22,000 by this time. So it will be breaking. So time is June. By June, if Nifty cannot recover, which that means a significant by mid of the a year it cannot recover. I think the worst part could come in the second half of the year as per the chart structure. Then we are in these possibilities will become more realistic. Now, this is the situation with Nifty 500. So lastly, we want to go back to before we end our discussion, 125 minutes Nifty chart and look at what is our option trades are suggesting right now. So option trades are largely, it started from Friday, that is the bear call spread, as you can see. Friday also initially, Thursday onwards, there was a trial attempt on the bull side, which failed. Once again, it started as a bear call spread. So overall, this is the situation with Nifty. And we will remain bearish outlook for now in the short term swing, medium term, and also in long term. Means in 125 minutes daily chart as well as weekly chart, all are we will remain overall bearish. So that's all, friends. Thank you so much for watching my video. All the best from my side to your trading. And as always, happy trading.